Hi everyone, I welcome you back to Silent Light Healing. I hope you guys are doing well, and let us check what are the messages from your person. It's the weekend, and I hope you guys will really enjoy this reading. I've already shuffled up the cards. Let us check आपके person के thoughts currently आपके बारे में क्या है, and what are the energies of your connection. What are the spirit guides wanting to let you know? Fine. So we have the judgment card here. So if you are waiting for some sort of justice or judgment to be served or justice to be served, it's definitely going to happen. If you are waiting for things to work out in your favor, tables to turn this time, तो वो डेफिनेटली हो रहा है, होने वाला है. ओके. सेकेंड, इफ यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन, अ स्पेसिफिक पर्सन ऑन योर माइंड, किसी से आप यू आर in love with somebody, and if you have really worked hard to manifest this person or maybe convince this person, it's going to happen. And your ancestors, your spirit guides, your angels have been watching, keeping an eye on your energies, your intentions, and the efforts that you have put in the connection. Okay, so if you were pure, if your intentions were pure, then definitely there is victory coming in for you. Secondly, अगर कोर्ट केस भी चल रहा था, then justice is being served this time. Okay. Next card we have is the High Priestess card. So you are trying to keep the things balanced. Definitely you are trying really hard to keep the things balanced. Secondly, आपको लगता है कि ये person जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर whosoever is on your mind, then they are your wish fulfillment. ऐसा आपको लगता है. Okay, because we have 1 1 1 and 1 here. Okay, maybe number 2 is important, number 4 could be important or significant, and 11 11 could be a significant sign for you. So maybe you have been seeing a lot of number signs recently, or maybe spotting such numbers, angel numbers. तो वो आपके लिए कुछ guidance बन सकता है. Okay, so please don't avoid them. Maybe moon cycles are important. You have started manifesting during full moon days or something. Maybe performing spells, white candle spells or white magic spells. I don't know. Yeah, definitely it is important for you. Maybe letters J, letter B is important for a few of you. Secondly, आपको लगता है कि sometimes you are observing this person. आपको लगता है कि इस person को observe करने से I will be able to make out कि इनको कितनी feelings है, ये कितना मेरे लिए कर सकता है या कर सकती है. ओके. आपको लगता है कि अगर ये person आपकी लाइफ में है तो आपके पास सब कुछ है. Because we have again 9 of cups, so it is a wish fulfillment card. आपको लगता है कि सारी wishes इस एक person की वजह से या फिर उनके आपके लाइफ में आने की वजह से सब कुछ फुलफिल हो रहा है. यू फील वेरी फुलफिल्ड इन योर लाइफ. यू आर वेरी हैप्पी, वेरी फुलफिल्ड. यू हैव एवरीथिंग, ऑल द कप्स फिल्ड अप. कुछ भी वो जो एम्प्टीनेस थी, वो जो खालीपन था, दे हैव दिस पर्सन हैज स्टार्टेड फिलिंग दैट अप. ओके, एंड दिस पर्सन इज वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, एंड देयर पर्सनैलिटी एज वेल इज वेरी पॉजिटिव. They have a very positive aura, and आप उनके साथ बहुत ही खुश रहते हैं. You feel really fulfilled with this person. Maybe 9 number is quite significant for you. 9 could be a birth date, a birth month, or anything. Okay, maybe something happened 9 days ago. Something is going to happen in next 9 days. 9 hours could be significant. Okay. If you are waiting for a call or text from them, then definitely within 9 hours, 9 minutes, you are going to get it. Okay, we have Queen of Pentacles. So you feel that this person is really very hardworking, independent है, एक mother figure है, वो एक आपको warmth देते हैं. Okay, if आपको लगता है कि ये पर्सन आपका बहुत अच्छे से ख्याल भी रख सकता है, दे कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी फुल ऑफ जॉयफुल एनर्जी, फ्रीडम, हैप्पीनेस. खुद ही अपने काम में बिजी रहना, सेटिस्फाइड रहना,
and yeah, this is what I'm getting. Maybe red color could be important, maybe flowers are important, maybe fruits are important, maybe yellow color is important for you guys. Yeah, very significant, important messages, very different messages I'm picking up today. Next, दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, अगेन द सेम एनर्जी है. ओके, यू आर सपोज टू क्लियर द क्लटर दैट इज प्रेजेंट इन योर हेड. ओके, मे बी देर आर कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैपनिंग इन योर कनेक्शन. कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है आप दोनों के, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, या फिर this could be a reason for your separation as well if you guys are in no contact situation. हो सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है आप दोनों का. यू बोथ हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज एज वेल, तो उसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपके कनेक्शन में आ रहे हैं. Okay, and you are taking up the burden. You are not supposed to take up the burden on yourself only. अगर ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, show it. अगर ये आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, they are taking you for granted, or maybe they are not seeing your worth. Okay, then it's not your duty to convince them anyhow. या फिर वो चीज़ आपके लिए बर्डन बन के नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में. You are taking up the burden of the whole connection and maybe whole relationship. अगर वो टेक्स्ट नहीं करते देन आपको लगता है कि क्यों नहीं करते, चलो मैं ही जाके I have to do all these things, I have to invest more and more, and I have to take the burden of the connection and other things as well which are equally important in my life. So इसकी वजह से आपको बहुत ही थकान लग सकती है, बहुत ही मेंटल बर्डन भी लग सकता है. Okay, so you are supposed to avoid that. I'm not asking you to leave the person or maybe never approach this person, but yeah, burden आपको नहीं लेना चाहिए जितना आप ले रहे हैं. Okay, so just try to clear the negative thoughts. You can meditate, you can pray as well for mental peace. Okay, so आपको बेसिकली जो भी आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट करते रहना है, एंड डोंट टेक द अननेसेसरी बर्डन. जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसका बर्डन लोगे फिर भी कुछ हो नहीं पाएगा आपसे. ओके, सिर्फ वो बर्डन ही क्रिएट करेगा. सो जो आपके कंट्रोल में है उतना ही करना चाहिए. देन लिव इट टू द डिवाइन. उनको जो करना है डिवाइन ऑर्डर में, डिवाइन टाइमिंग में वो करके ही रहेंगे. फाइन. Let us check what are the love messages for you guys from your person. What are they wanting to convey? Okay, just being near you is so intoxicating. Okay, I left when I saw you with somebody else. Maybe there is a third party situation आपके connection में हो सकता है. हमेशा ऐसा नहीं होता कि थर्ड पार्टी एज इन कोई लव इंटरेस्ट ही इंक्लूडेड या इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में. इट कुड बी एनी थर्ड पार्टी. ओके, इट कुड बी फैमिली मेम्बर्स, इट कुड बी work, career, time, or maybe your family, your friends, their opinion, anything. Okay, I bury myself to work to forget about you. Okay, they are staying busy, focusing on their career, as we already got the message. So many things remind me of you. Okay, so they are probably missing you. We will be together again. So definitely if you guys are in separation, no contact चल रहा है, communication नहीं हो पा रहा है, and if you are waiting for their call or text or maybe just simply approach you, then they are definitely going to come back. Okay, we both know I am not the one for you. Okay, so यही सारी insecurities आपके दिमाग में चल रही है and उसका ही burden आप लेके बैठे हैं, and you are supposed to somewhere heal yourself to clear out the negativity, negative thoughts, and get clarity about the situation. I was in love with you. So the last card that we have here is it's time for me to heal now. So आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं. You both are dealing with certain issues. You both have conflicting thoughts right now. एंड उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, एंड उसकी वजह से यू बोथ आर ओवर थिंकिंग, एंड
बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी है, ओके. सो बर्डन भी आपने ले लिया है, सो उसको अभी आपको हील करने की ज़रूरत है. सो फॉर नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन वॉट on other things which are equally important as well, and yeah, be positive. Okay, so this was a reading. I hope you resonated well with you. I hope it helped you somewhere, and I'll be back with another reading soon. Till then, take care. Bye bye. Stay blessed.